users to use STU and free the road space. And when Government of India promote conversion from private to public transport, why the state transport undertaking are charged rupees 22 per litre of diesel? Thank you, Josmani. This is the main question. Yes, the question, please. sir. As Be the brief. bulk users, Yes. the same STU can fill diesel at any public petrol bunk without bulk users fee on cash and carry basis. Thank you. My question to the minister, what is the rationale in this extra bulk fee of rupees 22 per litre of diesel to STU like all the state transport, especially Kerala State Road Transport Corporation? Thank you. I will again request Mr. Josmani, if you take this much time, then others will not get opportunity. Please be brief in your questions. Sir, I want to thank the honourable member. This question relates to LNG and CNG, but the question that he is asked in the supplementary relates to the price of diesel. Let me just inform the House through you, sir, that there were two broad processes. State public transport providers, to which the honourable member has mentioned, and some other state enterprises were being supplied diesel at wholesale rates. By wholesale rates, I mean rates which did not factor in dealer commission, etc., because they were going to those users directly. What happened, sir, in the aftermath of the pandemic and the military action which has taken place, is taking place in one part of the world, that global prices went haywire. And in the process, I should use to say, they wide fluctuation. As a result, the supplies to wholesalers somehow became more expensive than the supplies at the retail point. So what happens is a lot of people who were getting discounted diesel started coming and queuing up in retail outlets. I am told that this is a market mechanism functioning issue which should resolve itself very soon as there is stability in the and one knows which way the prices are going. But the idea is not for anyone to charge the wholesalers more than at the retail. Thank you. Second supplementary. Second supplementary, I make it short, sir. My direct question, does the government have any plans to propose STUs to convert any stipulated percentage of their existing fleet? Is there any additional subsidy proposed to state transport undertakings for purchase of new LNG, CNG vehicles? Thank you. Sir, liquefied natural gas, to which the honourable member is referring, is typically a natural gas cooled to a liquid state at about minus 260 degrees Fahrenheit or minus 162 degrees Celsius. Sir, LNG is entirely outside the purview of any governmental control. LNG is imported by the private sector directly for use in industry. The government have encouraged the establishment of what are called LNG dispensing stations. An LNG dispensing station is one, sir, and there are 4 of these, including one in Kochi in Kerala, where liquefied natural gas will go straight into heavy-duty public transport providers. Now, the station, out of the 4 LNG stations which are dispensing stations, which are available in the country, sir, 2 of them are in a position to start dispensing LNG. We had received a letter from the government of Kerala, which I have a copy, sometime, sir, I think in the month of August of 2021, where they told us that they were proposing to convert 400 state transport buses into use for LNG. We have encouraged that, sir. We have in fact said that this is a classic case of the chicken and the egg. The arrangements for the supply of the LNG are there, and once the vehicles which can use them are available, I'm sure they will start taking the LNG from the dispensing station. What happens, sir, is that LNG Be brief, please. is normally transported in cryogenic cylinders
And we are quite happy. Another station in Gujarat actually is dispensing about 70 kilos in a day, sir. Thank you. Manya Fauzia Khan ji. Thank you, Vice Chairman, sir. एक मिनट माइक इज नॉट वर्किंग माइक श्रीमती फौजिया खान जी की माइक अदर माइक प्लीज प्लीज माइक सिस्टम इज नॉट ऑन चलिए हाँ ये इट्स ऑन नाउ Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, according to a recent study which was made by Council on Energy, Environment and Water, CEEW, 70% of Indian households use liquid petroleum gas and their primary cooking, which is as their primary cooking fuel. But 85% have got connections. So there's a gap of 15%. Why is this 15% not using? And sir, the consumer subsidy, which was stopped during the COVID-19 pandemic, after the 50 rupees rise in the price, will you reconsider starting of the subsidy? Thank you. I want to thank the honorable member. The reference is to the extent to which our population and geographical area are being covered by CGD. Sir, I want to inform the honorable member that we started this process many years ago, and the 11th round of bidding is currently going on. And after the 11th and the 11A round are complete, we would have over 82% of our land area and 98% of our population complete, so that piped cooking gas can be delivered to household. But after the award of during the bidding, it typically takes a certain number of years. The only population which will be left outside would be those areas in the northeast and some in Jammu and Kashmir, where the physical ability to reach households is a little difficult because they are widely dispersed. And typically cooking gas which comes through the pipe is cheaper and more easily, is more consumer friendly than that which is distributed through cylinders. During the pandemic, the honorable member asked why the subsidy was stopped. During the pandemic, I would like to inform the honorable member that through the Ujjwala scheme, those who had received the Ujjwala benefits earlier, they were given free cylinders during the pandemic. And today we have a situation where the total number of gas connections, which stood at, I think, 14 crores in 2014, today has gone up to 30 crores. But this is an ongoing process where through the CEHD, CGD, we will be trying to cover the entire population. So this is work in progress. Thank you. Manya V. Vijay Sai Reddy ji. Sir, is it true that the center to set up 1,000 LNG stations across the country, which will attract of 10,000 crores? If so, how does the center propose to identify the locations of these LNG stations? Has the government formulated any policy and time-bound roadmap for setting up these LNG stations? Thank you. Honorable Minister. Sir, I want to thank the honorable member. We have a roadmap, but this is a roadmap which contains only proposals, and the idea is to set up 1,000 of these along the major highways, etc. Because typically liquefied natural gas, by virtue of direct dispensing from the dispensing station, can go into heavy vehicles, heavy duty vehicles, which will ply on those. And a certain procedure also for setting up is under consideration. I would be happy to share with the honorable member specifics on what we have. I mean,
we have also disseminated some of this in the press, that we are setting up the first 50 LNG fueling stations for the next 1,000 or so, overall 1,000 in the next few years. So I'd be happy to share with him what it would take, because it will require investment, both in terms of establishment of these centers and making them functional. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 257 माननीय राजमणि पटेल जी. Sir, a statement is laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री. माननीय सभापति जी, प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवासों सहित विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को शुरू करने और विकसित करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन किन राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचा शुरू करने और विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसकी जानकारी. धन्यवाद. Sir, I want to thank the honorable member. Sir, both urban transport and housing are state subjects. Today, under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, the government, central government, has sanctioned under 4 separate verticals a total of 1 crore 15 lakh houses, out of which I think about 70 lakh houses have been grounded and close to 45 or 46 lakhs have been handed over to beneficiaries. So typically this works in the following way. It is the state government which collects, as per its demand assessment, requests from its citizens under the 4 verticals, and then it consolidates these and sends them to the central government, which in turn has a committee for sanctioning and monitoring of these projects. This committee at the center is chaired by the Secretary in the Ministry of Housing and Urban Affairs. The states are expected, before they forward these proposals, all states and union territories, to first satisfy themselves that when they make the proposal, the social infrastructure, by that I mean connectivity from where the housing is, parking, water, sewage are all available. It is based on that vetting that the proposal is to come, but the committee headed by the Secretary in the Housing Ministry also subsequently asked them, please let us know whether you have these in place. Now, in most of the cases, the projects for affordable housing or BLC or in situ slum rehabilitation follow that. But we have noticed that in some cases there is a lag because the vetting and the arrangements were not made by the state government, which is essentially responsible both for urban transport and housing. Sir. Thank you. Second supplementary. सभापति महोदय, प्रश्न के भाग खा में मैं जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि AWS-LIG के लिए ऋण सब्सिडी योजना 25/6/15 से लेकर के 31/3/22 तक लागू की गई है, लेकिन मध्यम आय समूह के लिए 1/1/2017 से 31/3/2021 तक लागू है. क्या इसे भी 2022 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है? विचार करेंगे सर. माननीय मंत्री जी. Sir, the scheme for the EWS was operational for up to last year, and the scheme for the LIG is being implemented since June 2015 to March 2022, which means this scheme has a remaining few days. Sir, what has happened is that the original demand assessment for the Pradhan Mantri Awas Yojana was at about 1 crore. Subsequently, the states and union territories revised their demand assessment and it came up to 1 crore 12 lakhs. Now it is at 1 crore 15 lakhs. Now the schemes therefore have more or less matured and completed their process. And any project which has been sanctioned so far, naturally the government will ensure that those projects are completed by then. But at this point of time, sir,
it is not our intent, it is not under consideration to review this continuation of the credit-linked subsidy scheme for the MIG beyond 31st March 2021. Thank you. Manya Derek O'Brien ji. Sir, I draw the Minister's attention to a speech made by the Honorable Prime Minister in July 2018, where he said, and I quote, "By 2022, my government will ensure everyone has a house," unquote. This was made in Lucknow, 2018, July. That was a promise made to deliver a house to every Indian by 2022. I'm not going about doubling farmers' income in 2022 or bullet train by 2022 or electricity for all. So my specific question to the Minister, is it happening in 2022? If it's not happening, can you tell us when will every Indian have a house? Just give us the year. Thank you. Because this is the Prime Minister on record. Thank you, sir. Sir, I'm particularly grateful to my distinguished colleague for asking this question. It was precisely in pursuance of the Prime Minister who said that he has a dream that by March 2022, every Indian, no matter where he or she lives, has a pakka roof over his or her head, and that Awas will have a shauchalaya, a kitchen, gas cylinder, etc. That scheme, sir, had one additional very important feature, that the title of the home or the Awas would be in the name of the lady of the house, either singly or co-jointly, because it was our experience that whenever there is, let us say, some domestic disagreement, etc., it's the lady of the house who gets shortchanged in terms of property. So at least directly in the name of the lady of the house or co-jointly. Sir, in pursuance of this, all the states were asked in June 2015 to give us a demand assessment. And that demand assessment said 1 crore homes will have to be built. Pradhan Mantri Awas Yojana was conceived in June 2015. It has succeeded well beyond the 1 crore to 1 crore 12 lakhs, 1 crore 15 lakhs, and in the remaining 3 days of this fiscal year, in fact, I think the number might go up also a little. With that, the entire objective of the Pradhan Mantri Awas Yojana urban would be completed. Now there is affordable housing taking place in the private sector. And if the states were to say that they have still some more demand, what we are noticing is some states sent us demands. Later on, they changed that, reduced some number, added a few more. Total, I think, will be in the vicinity of 1 crore 15 lakhs. And I want to assure the Honourable Member, with this, the dream of the Honourable Prime Minister enshrined in the Pradhan Mantri Awas Yojana urban will stand fulfilled. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji. Doctor, please, he has given response. Doctor, I'm very happy to answer that. I'm very happy to answer that. The proposal started, sir, the scheme was devised in June 2015, started haltingly, and then in spite of the pandemic, which lasted a full 2 years, the scheme will be completed, as I said, all sanctions done by March 2022. Typically, sir, the time after grounding of an Awas is between around 18 months. Some where we are using modern technology, it's little less than 18 months, some it's 24 months. So the scheme will be completed within a very short foreseeable future of time. I would be happy to share with the Honourable Member the individual completion timelines of all the projects under the scheme. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji. Thank you. Narendra Jadhav. Thank you, Deputy Chairman, sir. The written reply given by the Honourable Minister indicates that the priority sector lending for affordable housing projects has been raised from 28 lakh rupees to 35 lakh rupees in metropolitan centers.
in this much amount of lending in metropolis like Mumbai, even a juggi jhopdi is not possible. My supplementary question, sir, is why is this one size fits all kind of approach? Why can't we make a distinction between metropolis like Mumbai and other metropolis which has a population close to 10 lakhs? Thank you. Typically in any project of this kind, and there are 4 separate verticals, and I'm quite happy to share with the honorable member. Let's take the first vertical, which is affordable housing and partnership. It's not the amount. What is important is the state government is required to provide the land, and after the state government provides the land for a project, then the central government and the state government, central government typically 1.5 lakhs, state governments vary, I know some state governments are providing more. So at the end of the day, the value of the unit which is constructed is more, because the value of the land is being provided by the state. Equally, in situ lets slum rehabilitation, these are informal settlements which came up in the center of cities. What we are doing is through a process of cross-subsidization and public-private partnership, we are getting investments in from the private sector, so those who are in possession there, instead of being settled 100 kilometers away, they will be provided housing in there, and equally some new commercial space, etc. will come up. That is the principle on which the GPRA colonies have also come up. Affordable housing is being encouraged all over. That's why limits have been provided for loans under priority sector lending. But in addition to that, sir, we've taken a large number of other steps. For instance, according infrastructure status to affordable housing, ensuring low cost, reduction in GST from 8% to 1% without input tax credit, increase, this is a priority sector lending which the honorable member set up, setting up an affordable housing fund in the National Housing Bank, regulations of floor space, which again, in some states like Maharashtra, to which the honorable member is referring, has been more liberal, and from our side we are encouraging all state governments to be more liberal and rational, to rationalize FAR so that more spaces, cities can either spread horizontally and have other disadvantages, or they can go up vertically. So we encourage that, sir. Thank you. Honorable KRN Rajesh Kumarji. The Honorable Deputy Chairman, sir. While the considering of pandemic situation period, the government considered to extend the credit-linked subsidy scheme under PMAY to next 2 years, because the middle class people is directly benefit this scheme. So I kindly request to the government, in circumstance of pandemic period, to please extend the scheme next 2 years. Good, thank you. It's suggestion. You should have put your question, please. Sir, all I can say is all these schemes are devised taking into account the demand assessment which comes from the ground. The demand assessment we think has been met. This is a suggestion which the honorable member has made on the floor. This suggestion has been noted. Thank you. Question number 258. Manisri Iranna Karadi. Sir, question number 258. Manya Mantri ji. First supplementary. Manya Karadi ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय. धन्यवाद उपसभापति महोदय. जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जल निकायों और मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन योजना का संचालन कर रहा है. मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि इस योजना में कर्नाटक राज्य की नदियों की सफाई और पुनर्स्थापना का कितना प्रतिशत कार्य वर्तमान से पूरा हो चुका है? धन्यवाद. माननीय उपाध्यक्ष जी, कर्नाटक राज्य की जो बात उन्होंने कही है, मैंने उत्तर में भी वो संख्या दी थी कि 1239 राज्य सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट्स आए हैं. नदी की बात उन्होंने कही है, नदी नहीं है. दरअसल वास्तव में नदियों के क्षरण और तालाबों को लेकर ये स्कीम्स आती हैं. इसमें 1172 को एग्जामिन किया गया है और 67 अंडर अप्रेजल है. सेकंड सप्लीमेंट्री.
कर्नाटक में वर्तमान में 200 से अधिक बांधे हैं। एक मुख्य समस्या इन सभी बांधों में तलछट जमा होने की है, जिससे सभी बांधों की भंडारण क्षमता प्रभावित होती है। मेरी प्रश्न है कि क्या सरकार ने नदियों, जल निकायों और बांधों की तलछट सब करने के लिए कोई योजना बनाई है क्या? धन्यवाद। बहुत माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। और ये जो विषय है गाद हटाने का, गाद प्रबंधन का, ये पूरे देश में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय भी है। और उसी को लेकर 2017 में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें तमाम उन क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओज और सबको उसमें बुलाया भी गया था। बाद में अगस्त में उसकी एक मसौदा पूरे देश में सर्कुलेट किया गया। बाद में सारे राज्यों से सुझाव आने के बाद और सारे एक्सपर्ट्स के सुझाव आने के बाद में उसमें जो कुछ चीज़ें थी जिनमें सुझाव को स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ कि पहले सिर्फ नदी तक ये माना जाता था कि हम गाद उससे अलग करेंगे, लेकिन वो जब मसौदा नया बना और जिसको स्वीकार किया सरकार ने, उसमें तालाबों को जोड़ा गया कि उनकी भी डिसिल्टिंग होनी चाहिए। जो प्रबंधन है उसमें सूचनात्मक और सैद्धांतिक तरीके से एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, वो उसका दूसरा बिंदु था। और तीसरी बात थी कि जो भी प्रबंधन में कार्य प्रणाली होनी चाहिए उसको भी अलग से हमने एनेक्सर 5 में स्पष्ट किया है। गाद प्रबंधन के जितने भी आर्थिक पहलू हैं, पहले कभी ये नहीं माना जाता कि इसमें पैसा लगेगा, जबकि इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इतने बरसों से हमारे बांध बने हुए हैं, नदियों पर हों या बड़े तालाब हों, उन पर डिसिल्टिंग का काम हम परंपरागत तरीके से करते रहे। लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि अगर कैपेसिटी कम होती है तो हम उन परंपरागत तकनीकों के अलावा भी आगे बढ़े और इसमें पैसा लगना है। उस आर्थिक पहलू को भी स्पष्ट किया गया है। कोई भी पर्यावरणीय नुकसान इसके तहत न हो और इसे डीपीआर बनाते समय एक उच्च स्तरीय समिति का भी प्रावधान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को कहूँगा कि इस पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और बहुत तेजी के साथ काम भी। धन्यवाद। माननीय नरेश गुजराल जी। Sir, in answer to the question, the Honourable Minister has stated that the Government of India is providing financial assistance to the identified schemes under repair, renovation and restoration PMKSY. Sir, my question is that we find that in Punjab, the Bhakra Dam needs to be desilted because the carrying capacity of the dam has reduced considerably, which is also affecting the power generation from that dam. Have you received any proposal from the Punjab government, and if so, what is the progress on that? माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न खड़ा किया है। हालांकि प्रश्न मूल प्रश्न से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। जिस स्कीम के बारे में प्रश्न पूछा गया था उससे इतर है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि ये समस्या की बांधों में सेडिमेंटेशन, ये समस्या के बारे में पूरे देश भर में चर्चा और चिंतन होता है। हालांकि जब बांध का डिज़ाइन होता है, जब बांध को बनाया जाता है, तो 100 साल तक उसमें जितना सेडिमेंटेशन होगा उसको मानते हुए, उसकी एस्टिमेट करते हुए, उस नदी और नदी के कैचमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे डेड स्टोरेज के रूप में चिन्हित किया जाता है। और जो डैम का जो रिजर्वायर का लेवल है वो एक डेड रिजर्वायर लेवल उसी दृष्टिकोण से रखा जाता है कि 100 साल तक का सेडिमेंटेशन होगा। लेकिन कुछ बांधों में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो 100 साल में जितना सेडिमेंटेशन हो एस्टिमेटेड था उससे कुछ ज़्यादा गति से सेडिमेंटेशन हो रहा है। पूरी दुनिया में इस विषय पर बहुत जगह पर अलग अलग तरह से तकनीकियों पर काम करने के दिशा में सोच प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार के मार्गदर्शन नेतृत्व में जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा है, हमने उसमें ड्रिप 1 के समय में भी 2 डैम्स का पायलट प्रोजेक्ट इस दृष्टि से लिया था, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी ड्रिप का जो ड्रिप 2 और ड्रिप 3 हमने लिया है, उसमें हमने स्टेट्स को कहा है कि वो अपने प्रपोजल्स उसमें बना करके भेजें।
हालांकि बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिस बांध के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, जिसके ओनर हैं, उन्होंने अभी तक इस बारे में प्रपोजल सबमिट नहीं किया है। यदि सबमिट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके उसमें किस तरह से तकनीकी का उपयोग करते हुए, क्योंकि अब तक देश में इस बात की कल्पना की जाती थी कि डैम्स में जो है ड्रेजिंग या डीसिल्टिंग जो है वो टेक्नो इकोनॉमिकली फिजिएबल नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये समय की आवश्यकता और मांग है, इसलिए इस दिशा में हम आगे बढ़ करके दुनिया भर के एक्सपर्ट से भी चर्चा कर रहे हैं और साथ में देश में इस प्रोग्राम को आगे कैसे ले जा सकते हैं इस पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। श्रीमती रजनी पाटिल जी। सर, अभी जो हाँ, माइक ऑन है आप। सर, इसी प्रश्न को अनुसरण करते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मंत्री महोदय ने बोला है हर खेत को पानी, ये जो योजना है सरकार की, इसमें किस तरह से पानी लाया जाएगा? इसका कारण ये है कि बहुत बार पानी, बाढ़ आने से पानी बह जाता है और बहुत बार पानी नहीं होने से पानी मिलता नहीं खेती को। तो एक ऐसी योजना बनाई थी पहले कि हर नदी जोड़ प्रकल्प जिसको बोलते हैं वो करने का इरादा था वाजपेयी जी के टाइम में। उसके लिए क्या उन्होंने किया है? और सिल्टेशन का जो अभी बताया, एक क्वेश्चन हो गया है, सिल्टेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कुछ जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा और जो मैं समझ पाया हूँ, प्रारंभिक रूप से जल का प्रबंधन, सिंचाई और कृषि, ये तीनों ही हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। इसलिए राज्य सरकारों को ही अपनी तरह से इसमें डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना होता है। यदि राज्य सरकार इस तरह के किसी योजना में प्रस्ताव लेकर के भारत सरकार की निर्धारित जो योजनाएं चल रही है उसमें लेकर के आती हैं, तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार भी करते हैं और उसमें राज्य सरकारों को अनुमत सहायता भी प्रदान करते हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने इंटरलिंकेज ऑफ रिवर की बात की है, मैं सदन में पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि 31 ऐसे लिंक आइडेंटिफाई हुए थे। उन 31 लिंक्स में से अधिकांश की PFR बनी है। 5 लिंक्स जो है नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान में आइडेंटिफाई किए गए और उनमें से मैं सदन को अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूँ कि एक नए युग की शुरुआत, और मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने का जो प्रकल्प था उस पर समझौता किया। दोनों राज्यों ने अपनी सहमति प्रारंभ की और बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। एक नए युग का सूत्रपात हुआ है और मैं ये मानता हूं कि इससे प्रेरणा लेकर के देश के अन्य प्रांत भी अपने नदियों के बीच को जोड़ने के बीच में लेकर के जो सहमति बनने वाली है उसको प्रगति कर देंगे, उसको गति देंगे। तो निश्चित ही हम ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है और जहां पानी बाढ़ हर साल आती है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो कायम कर पाएंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय नीरज डांगी जी। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार बाह्य सहायता के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर राजस्थान में जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु महत्वाकांक्षी बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण के संवर्धन और क्रियान्वयन करवाने पर विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई जानकारी होगी तो मैं पत्र द्वारा माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 259 ऑनरेबल श्री केसी वेणुगोपाल जी। क्वेश्चन नंबर 259 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा जाता है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, Chairman, sir. There are tallest claims about the policy of Make in India and Make for the World, especially in defense sector. The government of India has liberalized the FDI policy by giving 76% of foreign direct investment in the defense sector. My question is that whether this change of policy has been strengthened our indigenous production on defense sector, especially strengthening the public sector unit of defense sector. Now we are hearing the news that government of India's intention to privatize the public sector of the defense sector itself, and the MSME sector, we are very much rich in the MSME sector in India, where the government is taking any initiative to strengthen, to increase the indigenous production in defense sector by strengthening public sector and MSME sector. Thank you. मान्यवर
बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके माध्यम से काफ़ी जानकारी भी सदन को मैं कोशिश करता हूं कि उपलब्ध कराऊं। हमारी सरकार की भारत सरकार ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुरक्षा तभी मजबूत होगी मान्यवर जब हम टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 2001 में जो एनडीए गवर्नमेंट थी, पहली बार डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। और आपके माध्यम से यह भी मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि जहां 2001 से 2014 तक 14 सालों में केवल 215 लाइसेंस हमको इसमें मिले, वहीं हमने मात्र 7 सालों में, जो 7 साल का ये दूसरी अवधि हमारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, तो हमने इन 7 सालों में 353 लाइसेंस अभी तक इशू किए हैं। और ये भी बताना उचित होगा मान्यवर, 2001 से 2014 यानी 14 वर्षों में जहां डिफेंस और एरोस्पेस इनफ्लो में हमको 1382 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, वहीं इन 7 सालों में हमारी सरकार ने 3343 करोड़ एफडीआई अचीव किया है, जो एक बहुत बड़ी राशि है मान्यवर। और डिफेंस सेक्टर हाई एंड टेक्नोलॉजीज तथा इनोवेशंस द्वारा संचालित है। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को प्लीज पूरी जानकारी, आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं इसी में दे रहा हूँ। प्लीज let him reply, please. मेरा उत्तर आने दीजिए, पूरी इसमें आ जाएगी, काफी जानकारी भी इसमें है। आप चेयर को एड्रेस करिए और संक्षिप्त रिप्लाई दीजिए। जी ठीक है मान्यवर। हमको यहाँ पर हमने जो एनडीए गवर्नमेंट ने जो 201 में डिफेंस सेक्टर खोला था मान्यवर, उससे काफी लाभ हमको हो रहा है, बहुत सारा लाभ हो रहा है। और हम जो अपना आपने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सारी चीजें, सब चीजें हम बना रहे हैं। लेकिन जब कहीं कोई ऐसी चीज बनाने की जरूरत होती है, ऐसी चीजों को जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां पर हम एफडीआई को लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे हमारा रोजगार बढ़ता है, उससे हमारी सारी चीजें बढ़ती हैं। और हमने जो डिफेंस हमने प्रोडक्शन किया है मान्यवर, ये हमने पब्लिक सेक्टर को भी इसमें सौंपा है। तो पब्लिक सेक्टर भी इसमें आएगा, गवर्नमेंट के सेक्टर भी इसमें आएंगे। डीपीएसयू जितने थे हमारे, वो हमने अभी आपको पता है ऑर्डिनेंस को अलग करके हमने अपने 7 डीपीएसयूज बना दिए हैं। तो डीपीएसयूज भी आज ऐसे बनाए हैं कि पब्लिक सेक्टर भी कंपटीशन करेगा और हमारे डीपीएसयूज भी कंपटीशन करेंगे। तो उससे लाभ ही लाभ हो रहा है देश को, इसमें कहीं कहीं पर कोई भी हानि नहीं है मान्यवर। Second supplementary. My specific question was itself. How her government succeeded to increasing the indigenous production through public sector and MSME, which is not replied so far. Put your second. My question, my second supplementary, very clear. Whether the government is taking any coordinating efforts between private and public sector undertaking of defense sector. And also my question, after liberalizing the FDI to 76%, there is no much attraction from the foreign investment is coming. Why it is? The government is studying the factor. Now minister is telling 2014 to 2022, we have 3,000 foreign direct. Is it a big amount? आपने पुनः 2 क्वेश्चन पूछ लिए। My question is very clear, sir. माननीय मंत्री जी। सर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं, हमारी सरकार ने भारतीय उद्योग जगत को विश्वास दिलाने के लिए जो हमारा यूनियन बजट है 2022-23 में कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया है। 68% किया है मान्यवर, ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ा पार्ट है इसको निर्धारित करने का। और
जहां तक ख्याल है मेरा कि हमने पॉजिटिव जो आत्मनिर्भरता के लिए जो लिस्ट बनाई है, नोटिफिकेशन किया है, 209 डिफेंस प्लेटफॉर्म और हथियार उसमें हमने शामिल किए हुए हैं और डीपीएसयूज के 2851 आइटम्स की पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट का भी नोटिफिकेशन हमने किया हुआ है। तो मानिए, और इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई शंका का कारण ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा जो हमने लिया हुआ है और जो एफडीआई को हम ला रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 74% तो हम डायरेक्ट ला रहे हैं और बाकी 100% लाने के लिए वो गवर्नमेंट के थ्रू ला रहे हैं। धन्यवाद। दोला सेन जी, प्लीज प्लीज, दोला सेन जी प्लीज प्लीज। दोला सेन जी, आपका क्वेश्चन आप पूछिए। हम डिफेंस की कॉर्पोरेटाइजेशन की जो पॉलिसी डिसीजन है उसके भी खिलाफ है और बंगाल की कोलकाता से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेड ऑफिस मिटा दिया उसका भी खिलाफ है। लेकिन सवाल पूछिए जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी डिसीजन लिया है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट द मिनिस्ट्री is declaring the ministerial cadre permanent employees of OFB as surplus so that they can get suitable placement in any other central government concerns according to their options. Thank you. And why the ministry is not up to the mark to protect the contractual workers too, to be secured for their job and may get the salary without wage cut. Thank you, Dola ji. Through JM tender process You have by put central again two government. questions. Thank you. Please. माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है, हम कहीं से कहीं तक कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि कोई कटौती हमारे वहां से नहीं हो रही है। जितना आवश्यक एम्प्लॉई चाहिए, जितना भी रोजगार के लिए सक्षम स्पेशलिस्ट चाहिए, वो सब के सब हमारे पास उपलब्ध हैं। हमने सिर्फ एक प्लीज दोला जी प्लीज। हाँ। हमने सिर्फ एक जो हमारा ऑर्डिनेंस सेक्टर था वो बिखरा पड़ा था मान्यवर, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, अलग अलग है, उनका जो मैनेजमेंट है अलग अलग लोग देख रहे थे। इस बार हमने उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है, हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें बना दी हैं। जैसे अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी है तो एक वहाँ बना रहा था, एक वहाँ बना रहा था, अलग अलग थे, मैनेजमेंट अलग थे, उसको एक सेक्टर बना दिया है। अगर कोई गन बना रहा है तो बिखरे पड़े थे, उसको एक सेक्टर बना दिया है। इसी तरह से जो रॉकेट बना रहे थे उनको एक सेक्टर बना दिया है, बिखरे नहीं है। आज हमारा एक जो है, एक प्रबंधन जो है, एक को पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने उसको दे दी है। इसलिए कहीं से कहीं तक ये शंका बिल्कुल आप निकाल दें कि किसी को हम लोगों ने कहीं पर भी निकाल रहे हैं या बेरोजगार कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय प्रेमचंद गुप्ता जी, दोला जी प्लीज बैठ कर ना बोले। प्रेमचंद गुप्ता जी। सर, सरकार ने अपने जवाब में कहा सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ रिलायंस हमारी शुरू से ही पॉलिसी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मान्यवर, यूक्रेन और रशिया वार के बाद में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल चेंज वारफेयर में और कन्वेंशनल, इवन इन कन्वेंशनल वारफेयर एंड वेपनरी सिस्टम में जैसे चेंज आया है, मान्यवर, न प्राइवेट सेक्टर उसको कर सकता, न उसको पब्लिक सेक्टर कर सकता और न ही उसको एमएसएमई कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस इस टेक्नोलॉजी को किसी तरह से ऑब्टेन करे ताकि भविष्य जो है वो हमारा सुरक्षित रह सके। सवाल। थैंक यू सर। नहीं, सुझाव नहीं है, उसके लिए मतलब सरकार क्या कर रही है। ठीक है सर, सजेशन है आप। धन्यवाद। माननीय वीरेंद्र प्रसाद बैस जी। माननीय क्या कर रही है, मैं उसके लिए जानना चाहता हूं। ये सुझाव मूल आपने पहले सुझाव ही दिया था माननीय प्रेमचंद जी। प्लीज अब सवाल। लेकिन प्लीज मैं आपके माध्यम से सर पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से सक्षम है। देश चारों तरफ से चौक चाबंद है और कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हम हर मुकाबले का, हम हर जो समस्या आएगी उसका समाधान करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए पूर्णतः सक्षम है माननीय मोदी जी के नेतृत्व। धन्यवाद। माननीय वीरेंद्र प्रसाद बैस। Thank you, Chairman, sir. In her budget speech, Honorable Finance Minister given priority domestic production
in our defense sector, sir. And accordingly, in her budget, she earmarked more than 60% rupees from the defense production for the domestic production, sir. I want to know from the ministry, what is the route map already prepared by the government to implement the budget allocation? Already in our country, sir, 2 defense corridors is working, sir, domestic products for defense. One is in Uttar Pradesh, another is the, sir, Tamil Nadu. I want to know from Honorable Minister, government is considering to go for more defense production, domestic production corridor in other parts of country, including the northeastern. Thank you, माननीय वैस. मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 कॉरिडोर बने हुए हैं. बाकी देश के हिस्सों में भी जब जैसी जरूरत होती है जहां पर, उसके लिए सरकार समय समय पर निर्णय लेती रहती है. आपने कोई बात रखी है, वैसे मैं अगर एक संक्षेप में थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस समय हम कम से कम 72 देशों से ज़्यादा देशों को पहली बार इन 7 सालों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सिपरी नामक संस्था जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है, उसने बताया है कि हम जो हैं पहली बार 25 टॉप देशों में आ गए हैं जो आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान्यवर. इसलिए किसी भी शंका को मैं बहुत सार्थक नहीं मानता हूं, इसलिए इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं. मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हम सुरक्षित हैं. हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार हैं. धन्यवाद माननीय मंत्री जी. हमारी सेना धन्यवाद. अगले क्वेश्चन पे जाने दीजिए माननीय मंत्री. उपसभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने जानना ये चाहा है कि डीपीएसओ के संबंध में कि डीपीएसओ कहीं इसके कारण जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं उसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है उनका प्रोडक्शन गिर रहा हो अथवा वो लॉस में जा रही हो. मैंने कुछ इस प्रकार की चिंता कमोबेश उन्होंने व्यक्त की थी. उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ तक कि डीपीएसओ का प्रश्न है, उनको पूरी तरह से इक्विटी सपोर्ट देकर उनको मजबूत बनाने की कोशिश हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है. उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है सारे डीपीएसओ को. दूसरी बात, उनकी जो कमिटेड लायबिलिटीज अब तक की रही हैं, उन कमिटेड लायबिलिटीज को भी हम क्लियर कर रहे हैं ताकि हमारी डीपीएसओ किसी भी सूरत में कमजोर न पड़ने पाए. और साथ ही साथ डीपीएसओ को हाई लेवल ऑर्डर जितना भी हो सकता है मैक्सिमम हम प्रोवाइड करना है. इस समय मेरी जो जानकारी है लगभग 80% ऑर्डर आज भी हमारी डीपीएसओ को मिल रहा है. इसलिए डीपीएसओ को वीकेंड करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 260 माननीय विश्वम्भर प्रसाद निषाद जी. माननीय क्वेश्चन नंबर 260 माननीय मंत्री जी. सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय निषाद जी. उपसभापति महोदय, दिल्ली के भवाना इलाके में राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत करीब 300-400 फ्लैट बगैर बुनियादी सुविधाओं के बना दिए गए थे, जहां पर घटिया निर्माण सामग्री होने के कारण 11 फरवरी 2022 को मकान भरभरा के गिर गए, जिसमें रुकैया खातून, शहजाद, अफरीन 12 वर्ष उम्र, दानिश, ये लोग इनकी दबकर मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हुए मानो. तो माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिस तरह से आजकल बिल्डिंगों को, सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है कि 10 साल में ही गिर रही हैं, तो क्या ऐसे इंजीनियरों को, कार्यदायी संस्थाओं को दोषी मानते हुए मृतक पीड़ितों के परिवार को इसमें मुआवजा देंगे जो? धन्यवाद. धन्यवाद. I want to thank the honorable member for raising this question. Sir, the Rajiv Ratan Awas Yojana or RRAY was a scheme which was implemented by the then government of the National Capital Territory of Delhi between the years 2007 and 2010. It's a state government scheme. It was not an independent scheme, sir. It was part of the
JNURM or the Jawaharlal Nehru Urban Rehabilitation Mission. Sir, these homes were built between 2007 and 10, and since then they have not been allotted. That would require a separate discussion. From the side of the central government, we have on many occasions requested the state government that these apartments or flats constructed in between 2007 and 10 under the Rajiv Ratan Awas Yojana should be made available to the central government for a new scheme that we have about affordable rental housing complexes. Sir, we asked the state government under whose jurisdiction this comes, the Delhi government, as to what precisely happened in this scheme. The honorable member is absolutely correct that one building, block 30 of the 32 houses in Gogna, which was part of an economically weaker section housing complex, collapsed in 11 February 2022. The answer we have received from the Delhi government in writing is that during the course of the pandemic, there was large-scale theft and pilferage, including of the steel used as part of the reinforcement and girders. In other words, this was a case of theft by miscreants, which resulted in the basic structure of those apartments. So you will appreciate when apartments are built floor upwards, the floors, people removed the concrete and stole the steel girders, etc. And that this unfortunate incident which took place, we have been told that this was some people who were there at that point of time. They have suffered on account of this. A few have lost their lives also in this most regrettable thing. But as I said, we have requested the state government that for the remaining houses out of the 35,000 built, these should be made available. Sir, the state government tells us the third-party quality audit was undertaken during the construction of this, because the honorable member has said कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई. Sir, ये state government का project था, and they have said that they had a third-party quality assurance, and that I will give you the exact answer. DSIIDC, that is the Delhi State Industrial Development Corporation, has stated that the inquiry has been completed by the engineer-in-chief, as per which this incident happened due to extensive damage to the structure by thieves, miscreants, by stealing steel reinforcement from the RCC monolithic structure of the blocks during the COVID lockdown period. Please. Thank you. Second supplementary. माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था कि मृतकों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ चोरी हो गई, वहाँ की सरिया गटर केंद्र सरकार की पुलिस है इनकी. तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उसमें कितने लोग चोरी करने वाले पकड़े गए, और क्या जर्जर फ्लैटों को बनाने के लिए कोई योजना है, आप उनको दुरुस्त करने के लिए कोई योजना बनाएंगे? धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद. Honorable member is raising a very relevant question, and I think that question is very specific. Why were the peoples there? These were damaged flats or flats where the steel reinforcements went. And if some of them were there for whatever reason, in question of compensation, we'd be very happy to ask the state government, because these are flats constructed under the Rajiv Ratan Awas Yojana by the state government. We'd be very happy to ask them. And I will go a step further. If we can also on our side to see whether we can rehabilitate them elsewhere, we would be very happy to consider that also under one of the central government schemes. But this is primarily the responsibility of the Delhi state government. Thank you. Manya Veer Ranjan Viswas ji. Sir, thank you. Through you, I would like to know from the Honourable Minister, what has the central government done in view of this unfortunate incident to ensure that such deplorable acts of negligence, be it on part of the state government
or on part of the central government relating to houses built for the marginalized and the poor of this country under such scheme or schemes is not repeated in the future. Thank you, sir. First and foremost, every state government or union territory, as in this case, which has undertakes construction, they claim that they had a third-party quality assurance which looked into this. But why should any space constructed as long ago as 2007 remain unallocated till 2022? That is the first question. Any building, even if it is constructed to the highest quality, and if it is allowed to remain vacant, you will have pilferage of the fittings. This is a standard practice, because in a country where you have people, migrant or other populations, so the first issue arises, and even now, of the remaining 35,000, we have been repeatedly writing to them to say that please make this available for affordable housing rental complexes, so that we can provide temporary shelter to those who they may have a permanent abode in their place under the Pradhan Mantri Awas Yojana, but if they come looking for work in a capital or any other big city, we can provide these after doing them up. The second issue, sir, is that it is not what the central government, we have clear guidelines which are given in all codified for the whole country, but at the end of the day, the central government can only make a set of rules. And I come now to the most important point. Sir, theft is a criminal act. You can go into any building with a hammer, sledgehammer, start removing the concrete and the fittings, etc. Now that is something for which the concerned authorities have to assume responsibility. As far as we are concerned, we are willing to help at each stage. Thank you. माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ सर, ये 2007 और 10 के बीच में बिल्डिंग बनी और दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है मंत्री महोदय के ये कोविड के टाइम पर मिसक्रिएंट्स ने इसमें चोरी कर ली है, तो 2007 और 10 में बन ली, कोविड तो 20 में आया है, तो दिल्ली सरकार ने ये मिसगाइड किया है, गलत जवाब दिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। ये आपका कमेंट सुझाव प्लीज। I think you expect an answer from me on this one, sir. Yes, thank you. I may actually endorse that view. Thank you. No. Question number 261, माननीय श्री केसी राम मूर्ति जी, माननीय केसी राम मूर्ति, not present, माननीय मंत्री जी, रख दी गया। No supplementary. Question number 262, माननीय श्री राम सकल जी, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राम सकल जी। से पूछना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में पारसियों की संख्या 1,14,000 थी, लेकिन आज 70 वर्षों के बाद घट करके 57,264 रह गई। क्या कारण है कि पारसी समाज, अल्पसंख्यक समाज की आबादी दिन पर दिन घटती चली जा रही है? पारसी समाज का देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महसूस किया और जियो पारसी कार्यक्रम के माध्यम से पारसी समाज की घटती हुई जनसंख्या को किस तरह से उसको रोक लगे और बढ़ावा बढ़े, उसका हमने कार्यक्रम किया। और मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि जियो पारसी के कार्यक्रम के तहत इन पिछले 7 सालों में लगभग 359 पारसी समाज के बच्चों ने जन्म लिया है और पारसी समाज की जो जनसंख्या घट रही है उसके संबंध में लगातार हमारी सरकार विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं बना रही है। इसमें जो है वो कोविड के समय जिस तरह से परिस्थितियां आई थी, कोविड के समय जो एक समस्या थी उसको हमने एक स्टडी कराई और स्टडी के माध्यम से हमने ये महसूस किया कि जियो पारसी कार्यक्रम में इन्हें और मदद करने की आवश्यकता है। तो इसमें चाइल्ड केयर सपोर्ट के लिए जो 4,000 होता था उसे 8,000 किया गया। उसी तरह से पहले 8 साल की उम्र के बच्चों को ये दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 18 साल किया गया और इस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पारसी समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक होंगे बच्चे